Hello. Good evening to all of you. Today, let's take stock of what all topics we have covered. I will be taking another 5 classes. Okay, 5 classes because I'll be on leave from May. So in the month of April, I'll take 5 more classes. I have covered the following areas. Okay, macro and microeconomics, economic systems, national income. Be little careful about that, national income. So chapters which you should be little careful about, one is economic system, national income, growth and development. You're likely to get some questions. Inflation, you're likely to get some questions. Free market and limitations, you may not get any questions, but that will be useful for your main examination, for your general writing. Then India's economic system, in the last class, I tried to cover that. And then Odisha budget. So yesterday also, Deepak could have covered. So today, friends, we'll cover a very, very important area. All of you be a little careful on this. So this is on poverty estimation. Just note down poverty estimation. How do we estimate poverty? And we will also look at how India does its planning. Okay, we had a planning commission earlier. Now we have a NITI Aayog. So we'll try to see how earlier the planning commission was working. We'll try to understand what is planning, how the planning commission functioned, and how the NITI Aayog is presently functioning. It's a very, very important class. Please, so we will do that today. Now, for any country, just keep a note, for any country, there is no country which doesn't have planning. Whether it is US or England or France or India, you don't find a single country which doesn't have economic planning. You may not have a planning commission at the top, but there is always a planning. No government, no democratically elected government can function without planning. And for planning, for making good national planning, you require some critical statistics. You know, what we call as data is actually information. Do you know the difference between data and information? Data is, you have all kinds of data, but relevant data is information. So first note down that, you know, there are a few parameters, there are a few information that a government requires for planning. So one is national income. National income. The second is every government, you can concentrate on every government wants information on poverty levels and also on income inequality. Are you getting my point? All this data is collected by the NSSO, National Sample Survey Organization. Now, please note down that the government also needs to know what is the employment level. Okay, and for that, the survey is called PLFS. PLFS. So that is connected by, that means what is the kind of employment is there. So that is also collected by NSSO. But please note down, there is another organization, it is a private organization called the CMI, Center for Monitoring Indian Economy. This is based in Bombay. This organization collects unemployment data on a monthly basis. Please note down, on a monthly basis.
whereas the government data is on a yearly basis. There is a gap of 2 years. But CMI gives you information on employment, unemployment, different kinds of unemployment on a monthly basis. And it's a very important database. Then please note down inflation. Now, on inflation, you have data on wholesale price index. Wholesale price index is required by the industry, by the business houses. The business houses would like to know what is the wholesale price. Whereas people like you and me, we require consumer price. Now, so WPI data is collected by NSSO. Whereas, please note down, whereas the CPI, Consumer Price Index has two parts. Please note down, Consumer Price Index has two parts. One is consumer price for agricultural labor. One is CPI-AL. What is that? CPI-AL. Consumer Price Index, agricultural labor. The data is collected from the villages, from the agricultural workers. We also have data on CPI industrial workers. CPI industrial workers. So I'm giving you these distinctions because suddenly you will find in your question CPI-IL, CPI-AL. So you must know very clearly what is the indicator that you are dealing with. What is the statistics that you are dealing with. Are you getting my point? So for consumer price index, the workers, agricultural workers in the village have a different set of standard of living than the standard of living of workers in the cities. That data, please note down, that data is collected by the economic advisor in the Ministry of Industry. Ministry of Industry. It is not collected by NSSO. বুঝি পড়ছো তো? ধরো পচারলে যে আসলা CPI-AL is corrected by whom? NSSO আসলা, Ministry of Industry আসলা, RBI আসলা, তুমি সাইসে মার দাও NSSO মার দাও। Are you all getting me? So basically you must be very very clear who to source to data টা আসছে। তা পহলা লেখা trade data. Trade data, all data on trade is collected by the Reserve Bank of India, is notified by the Reserve Bank, because RBI is the custodian of our foreign exchange reserves. Amar jo foreign exchange reserve achi pra $700 billion ro tar controller ki hala Reserve Bank of India. Buchu to? So every trade data is collected by the Reserve Bank of India. Okay. तापर लिखा last है health and nutrition. Health and nutrition, whether it is of a child or of a woman or of an adult, men, women, and adult. Those data are given by IIPS, International Institute for Population Science, IIPS, Bombay. IIPS, বুঝি পড়ছো তো নে, International Institute for Population Science. They bring out, Manjusha, what is called the National Family Health Survey, NFHS. And the latest survey is NFHS 5. Please note down NFHS 5. That is for the period 2019 to 2021. Please note down. That is for the period, which period? 2019 to 2021. तेणु आमर जहाँ डेटा अच्छी माल न्यूट्रिशन उपरे एटा सबू ए डेटा होची
लेटेस्ट डेटा होची 21 2021 रो. आर यू ऑल गेटिंग मी? सो सो ए जो प्लानिंग कमिशन अच्छी कि नीति आयोग अच्छी, so they depend on these agencies for data. There is no independent data collection by the planning commission. Economic survey also, when they bring out detailed data, they have no independent mechanism. They depend on all this. बुझी पड़छो तो जो trend of बुझी पड़छो ना नहीं. So these are the critical statistics which is required for what? For planning. कौन हाला data? उधर national income, poverty and income inequality, unemployment, inflation, trade, nutrition, and health. You should be all very, very clear on these data sources. Now let us first go into estimation of poverty. Please note down. Estimation of poverty. ये ध्यान दे समझते हैं ना? Estimation of poverty started with this study by Professor Dandekar and Rath. ये दिजोना गोखले इंस्टीट्यूट रो डायरेक्टर थिले. गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस रो गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स रो से माने थिले डायरेक्टर थिले. Dandekar and Nilakant Rath. D.N. Dandekar, he is a Maharashtrian, and Nilakant Rath is an Oriya who was feted last year as the economist of Odisha, distinguished economist of Odisha. Last year, you मन रखता नाटा मन रखता Nilakant Rath, तांको last year economist of the year ऊपरे सम्मान करा जाए ची. तर प्रश्न आसला जे कहा को सम्मान करा हितला भारत ओडिसा रो ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऊपरे नीलकंठ रथ हैला. नीलकंठ रथंकर क्लेम टू फेम हला पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन बुझ पड़छ तो एमते टिके टिके जे मन रखिबो ताहले तमरो एक्स्ट्रा एज रहबो ओवर अदर्स. ओके खाली दंडेकर रथ. सो यू मस्ट नो ए लोकटा किए. सो please note down, their report was given in 1971. India, so the planning commission then constituted a committee under Dandekar and Rath. मु तांको आजी पॉवर्टी आउ एटा प्लानिंग ता करूची. मु या पूर्वरु कोन कवर करतो कहि दोची कि बस एकदम ठीक समय आछे. सो बुझले कि दीपक. सो Dandekar and Rath जो रिपोर्ट कले, that was the first report by the planning commission. They constituted this committee in 1964-65. Please note down. टिके टिके डिटेल रखो, खाली Dandekar ले हबनी. The committee was constituted in 1964-65. Okay, and they took the database of 6061. Please note down. They took the database of 6061. So National Sample Survey Organization 16th round they took. National Sample Survey Organization जो consumption data, NSSO collects data on household consumption. Please note down. ठीक है, note करो household consumption survey, HCES, household consumption survey. Okay, expenditure survey, household consumption expenditure survey. तार 16th round जो डेटा थिला 6061 से बेसिस रे ए रिपोर्ट ता 71 रे हेची. बुझी पड़छ तो ठीक डिटेल मन रख, कारण टिके टिके धर क्वेश्चन कोठी टिके डिफिकल्ट आसी गला तुमको डिफिकल्टी होगा. सो नाउ Dandekar and Rath रो क्राइटेरिया रहला फॉर पॉवर्टी लाइन जे मिनिमम कैलोरी इनटेक. प्लीज नोट डाउन मिनिमम कैलोरी इनटेक. मिनिमम कैलोरी इनटेक. So they took 2250 calorie both for urban and also rural areas. Same calorie. They did not make a distinction between urban area and rural area. Subsequent committee have made a distinction. Subsequent committee कहउचंती गां लोकड़ा टिके बेसी काम करंती, तेन तांकर बेसी कैलोरी दरकार. बुझी पड़छ तो. So whereas Dandekar and Rath, they believed that the calorie requirement is the same. So please note down. So they fixed, please note down, जे 15 टंका
for rural household और 22.5 होची urban household. This is the critical data at 60-61 prices. 1960-61 प्राइस रे रूरल एरिया पे हला 15 टंका आउ अर्बन एरिया पे केते हला 22.5. And they found, please note down, they found 40% of rural population are poor and 50% are below poverty line. So for them, 230 million people, 230 million लोग, and overall, please note down, overall say they said 41%. भारत रे 60-61% रे 15 टंका रूरल एरिया पे 22.5 अर्बन एरिया पे से माने नेले and से माने कहले जे around 230 million people were considered poor. So this is the first official estimate of poverty line. Now why poverty line is very important? Because it helps us in planning. ताले कोना में what kind of plans we should have, what kind of schemes we should have. Because the objective of the government would be poverty mitigation. Please note down. Poverty mitigation, not poverty elimination. Please note down. Poverty elimination, जो गरीबी हटाओ, Mrs. Gandhi कहला, that came in 71. Please note down. Mrs. Gandhi introduced the concept of poverty elimination in 1971. SDG talks of poverty elimination. Please note down. SDG in 2015 talks of poverty elimination. 2015 रे बुझছো तो टिके मन रखो द डिफरेंस गोटे हला पॉवर्टी मिटिगेशन पॉवर्टी केमते में कमेबा गोटे हला पॉवर्टी हमें केमती एलिमिनेट करबा पूरा दूरीकरण करबा ओके तापरे देयर वाज अ सेकंड कमिटी अंडर YN अलग प्लीज नोट डाउन YN अलग कमिटी रो he was my teacher in Delhi. He was my teacher, brilliant teacher. He's an agricultural economist. Please note down, he's a very famous agricultural economist. So he was the one who said he made a distinction between urban and rural calorie intake. से कहले urban area पे केते रहे बाबा 2400 आउ सॉरी रूरल पे रहबा 2400 urban रहबा 2100. Are you all getting me? 2,400 calories for rural area, 2,100 रहबो कहाँ पे? Urban area. Now for them, the poverty line was 49 rupees for rural and 56.6 rupees at 73-74 prices. Please note down. At 73-74 prices, आगुर थिला कोटरे 60-61 रे थिला. वर्तमान सेट आइछि 49 और 56.6. Are you all getting me? Next committee hela Lakdawala committee in 1993. Lakdawala was a monetary economist. He was from the Bombay School of Economics. Please note down that in India there are two schools of economics. Gote hela Delhi School of Economics, jo man hela fiscal economics, jo man fiscal policy. Au hele monetary school hele, they are called Bombay economists. Monetary school kahar thila? Milton Friedman ro. Kahar thila? Milton Friedman. Fiscal policy kahar thila? Keynes ro. Delhi School of Economics, बुझी पड़छो? दिल्ली रो जो economics माने, they are chelas of John Maynard Keynes. Bombay School रहला से माने चेला हले of whom? अच्छा, Lakdawala कहले, Lakdawala did not change the criteria of 2,400 or 2,100. He only mentioned one thing, the poverty line should be state specific. प्रत्येक माने ताकर main change हला, जे instead of looking at poverty line on a national basis, he said each state must have a different poverty line because the cost of living is different for different states. Please note down. Aji tome eithi dosa खाउचो 15 टंका रे बॉम्बे रे गले सेटा 25 टंका हबो कि 30 टंका हबो. मोर एबे भी मने अछि
मतलब फर्स्ट 76 रे दिल्ली गली जिते मैं दोसा खाया को गलु से कहला 10 टंका बोली आमे गलु नाई मसला अधा अधा कर दोसा खाइबा सला आमर ये 2 टंका दोसा थिला 76 रे 2 टंका थिला बेले सेठी मोर मन है मसला दोसरा 10 टंका अरे दिल्ली में आए हो दैट तो आर पैसा दो तो सेठी हमें जानिलु जे आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो कॉस्ट ऑफ लिविंग ता कोन एठी देखला को दिल्ली दिल्ली रे ओडिसा रे भुवनेश्वर रे सिनेमा टिकट दाम था टंके 25 पैसा बालकनी टंके 25 आउ स्पेशल क्लास रे टंके सिटी ग्राउंड 5 टंका नाई भाई साहब 5 टंका कोट आसीबो रे बुझी पड़छो तो सो कॉस्ट ऑफ लिविंग सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन प्लीज नोट डाउन Lakra was the first person who focused on poverty line for each state. एरा टिके टिके मन रखो घोषिगिरी गले एगुड़ा का जमा आंसर करि परिबो नाही बुझी पड़छो तो and then he also mentioned one thing very clearly जे poverty line should be updated every year based on consumer price. अरे बुझो कि नहीं तमे कहबो जे एटा थिला सर तो नहीं जहां तुम पॉवर्टी लाइन अच्छी तमे एवरी ईयर यू शुड अपडेट दैट सो कौन लकड़ा कहला जे पॉवर्टी लाइन शुड बी स्टेट स्पेसिफिक बिकॉज ईच स्टेट हैज अ डिफरेंट कॉस्ट लेवल एंड यू मस्ट रिवाइज पॉवर्टी लाइन एवरी ईयर तापर हमें आसीबा जो मेन कमिटी है तेंदुलकर कमिटी आमे समस्त सुन प्लीज नोट डाउन 3टा इंपोर्टेंट कमिटी है गोटे है दांडेकर रथ आ गोटे तेंदुलकर आउटा रंगराजन ए 3टा किंतु तुम मैंने निहाती वाईएन अलग जो कहली आ ये जो लाकड़ा वाला जो कहली ताकू टिके मन रख अनेक समय एटा दिए चली आसीबो ताले यू शुड नॉट बी कॉट नथिंग नाउ प्लीज नोट डाउन the Tendulkar committee report. Tendulkar was my professor in Delhi School of Economics. Okay, he was also part of the जो है नतला हमारा पे कमीशन रिपोर्ट ही तला से पे कमीशन रिपोर्ट तले. He was a very simple man. Cycle रे ऑस्ट्रेलिया दिल्ली स्कूल को पाठा पढ़िया पे. He was the only one who gave a dissenting note. सबु मेंबर कहले चले आईएएस लोगों को गोटे पियन मिलु बोली माने पे कमीशन रे गोटे पियन रखिया पे तांको गोटे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलु बोली से कहले एटा कोन गोटे रजर माने एटा कोन माने फ्यूडल कंट्री ना कोन एंड इट वाज बिकॉज़ ऑफ हिज रिकमेंडेशन वी डिड नॉट गेट एन अलाउंस फॉर ए पियन कहले निजे किछि काम करो तमे घरे भी किछि काम करो चाकर रखिया कोन दरकार सो ही वाज अ very principled man. Tendulkar was a very highly respected economist. बुझले कि से सरा धोती मार के आस्ट्रेलिया धोती कुर्ता पिंदी के आस्ट्रेलिया हम क्लास को इतने बढ़िया पढ़ाते हो कहबा ने मैन ऑफ रियल प्रिंसिपल सो ही बेस्ड द कमिटी रिपोर्ट प्लीज नोट डाउन ऑन द एनएसएसओ 61st सर्वे दंडेकर थला 16 टा को उल्टे दियो 61st हला तो एमती करी मन रहबो ताले जदि पचार देबे जी सेटा को एनएसएसओ सर्वे थला 61 थला कि 62 थला कि 55 थला सात कही नथिले बुझी पड़छ तो कथा हसुच खाली सेतबेले त पाई जो सर मन रखियो अरे सर कहिथिल हला नाउ दे वर द फर्स्ट वन हु सेड जे आमे पॉवर्टी कैन नॉट बी बेस्ड ऑन कैलोरी पॉवर्टी शुड बी ऑन ए ब्रॉडर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से सर्विसेज को मते इंक्लूड कर हेल्थ केयर एजुकेशन he was the one who included खाली खाई किरी किमिति माने तमरो रक्त हला सेटा अपन न करी what kind of services he was the first one who focused on services education health leisure एउडा को सब education और health दीटा को फैक्टराइज करा पे से कहले okay so for him please note down 12.7 rupees हला rural area और 17.7 हला urban area. Now please note down some people say 13 and 18 also. Please note down 13 और 18. Please note down किंतु तांका recommendation थिला 12.7 और 17.7. तो मैं ताको माने राउंड अप करे पे कहि पारो किंतु but this is the exact figure.
तापर से कहले से 2004-5 रे 2004-5 रे 11 रे सेटा हला 32 टंका अर्बन एरिया पे और रूरल एरिया पे केतना हला 26 टंका. Now they depended on, please note down, mixed reference period method. एटी नोट करो. नेक्स्ट स्लाइड तो देखिए एटा कोन मिक्स्ड पीरियड रेफरेंस पीरियड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मेथड. एटा सार भी तांको बही रे लिखछन्ती किंतु टिके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ए जो क्वेश्चन ता आसीबो सेते तमे टिके फसी जिवो कोन सेटा केमते मिक्स्ड पीरियड रेफरेंस मेथड ता टिके बुझियो पड़ो हला. मिक्स्ड पीरियड रेफरेंस मेथड माने तमे जत्ता बेले गोटे कंज्यूमर सर्वे करे को जाउचो से कहले जे देयर आर सम कमोडिटीज you consume frequently, food items, भात रुटी हला. सो जोड़ा का frequent expenses, please note down, frequent expenses से गुड़ा का तमे 7 दिन रे information ता कलेक्ट करिवो. माने when you ask a consumer ताकू पचारिबो जे एई सप्ताह रे तमे कोन कोन खाइ छ. माने एटा कोनते रिकॉल पीरियड. जेतले तमे गोटे कंज्यूमर को जाउचो पचारिया पे कौन से खाउछ न खाउची सेटा कोन करिवो से कहू जे तमे सप्ताह भितरे अरे केतरा अंडा खाइछ मते कहलो ठीक है केते खीर पीलो केते रोटी खाइलो से कहले दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस. बाकी हला जो इनफ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस लुगा केते किनछो तमरो स्कूटर केते किनलो सेडा का सब रेफरेंस हला वर्ष के. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So the data that is collected is in two parts. One is involving 7 days. The other data which are long-term goods, capital goods. Sevda ka sabu hala 1 year. Now for him, please note down, in 2004-2005, 37% people were below the poverty line, which has come down to 21.9% in 2011-12. So, please note down, 21.9% hochi the reference point for all of us, even as of now. Jette ajikali jette discussion bhi hochi, we refer to this only. Baki onek data bharchi onek statistics bhi hochi, kintu this is the data. The Congress government appointed the Rangarajan committee. Please note, C. Rangarajan committee in 2014. In 2014, Rangarajan कहले जे the calorie set, he changed the calorie thing. जे 20-90 calorie हला urban area पे 21-55 हला कहाँ पे urban area पे. जोटा 2400 थिला सेटा को एक कले 2155 बुझी पड़छो. अगेन ही केम बैक टू व्हिच मेथड एटा किए कहितला अलग कमिटी रे कोथर कहितला अलग कमिटी. क्वेश्चन आसीबो को कमिटी एटा थिला अलग कमिटी रे बुझलो तो अलग कमिटी के थिला 2400 थिला सेटा को कले बर्तन केते 2155 एटा. अच्छा प्लीज नोट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम ही लुक्ड एट प्रोटीन. प्लीज नोट डाउन, protein items were earlier not included in the consumption baskets. आमे खाली carbohydrates कहूतिले केते चावल खाइला केते रोटी खाइला केते डाली किंतु protein was never अंडा केते खीर केते these were not included protein item. He also mentioned जे what is the minimum protein and grams which a person should increase. 48 grams protein or 50 grams of ग्राम बुझी पड़छ तो ये क्वेश्चन आसीबो जे कोन कोन माने डिफरेंस रहउची. Now he believed that the cost of housing, please note down, the cost of housing is very high in urban areas. So therefore poverty line for city was 47. It was 47 as against 32 by के करथला तेंदुलकर. प्लीज नोट डाउन, तेंदुलकर केते कहितला 32, ये कहला 47. से कहला द कॉस्ट ऑफ लिविंग particularly cities is far higher than the urban area.
Now he estimated, please note down, he estimated the percentage of poor as 29.5%. And this report was rejected by the government. ସେମାନେ ଏଇ କମିଟିକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ to bring down the poverty percentage. ସେ ସେଟା ନକରି ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଲା। ରଙ୍ଗରାଜନ ତାଙ୍କର ଚାମଚାଗିରି ନକରିକି ସେ କହିଲା ନାଇଁ 29.5%। କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମାଡ୍ରାସ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି, ଷଠିଆ ହେଇଗଲେଣି ପୁରା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ କଥା? So what I have done, friends, now you look at the poverty estimation methodology. Please note down, till 1993-94, the reference period was uniform, 30 days. Please note down, reference period, whether it was Lakdawala or it was Nilakant Rath and Dandekar or Y.N. Alag, they said the reference period hala, it कहते recall period. Please note down, recall period. माने तमे जहाँ को जो पचारुच, they believed जे 7 दिन भितर तार मन जति अच्छे मन रहबो आ तमे 7 दिन आपको एक्सीड करिवो तार मन नथिवो. This was replaced by modified mixed reference period. Modified mixed reference period, which I have already explained to you. So please note down, modified mixed reference period re tinita reference hochi. Please note down, modified mixed reference period. Modified mixed reference period was not adopted by Tendulkar. Tendulkar adopted modified mixed reference period. Tendulkar कौन करथिले? Mixed reference period करथिले. गोटे week plus 1 year. Modified mixed reference period was introduced in 2014. Please note down, modified mixed reference period re hela the regular item hochi gote week. Please note down, regular item hala gote week. Tapare other regular goods and services hala gote maso. जोड़ा का तुम्हें regularly consumption करूचो, regularly consumption करूचो day to day basis रे खीरो हला, चावल हला, भात हला, सेटा पे केते गोटे week. Now other items which you also consume, that तुम्हें किराना आणुचो, मास रे आणुचो. So that is one month. बाकी हला rest हला yearly. Have you understood now? तीनटा reference period, गोटा हला uniform, गोटा हला mixed, आउट हला modified mix. यदि तुमरो क्वेश्चन आसी जबो तीनटा रे तमे घबरे बुझ पालो तो मॉडिफाइड मिक्स रे तमे तीनटा रहला गोटे हला गोटे वीक 30 दिन आउ वर्षे हला बुझ पड़छो तो एंड तेंदुलकर रिलायड ऑन द mixed reference period. Now please note down that the World Bank brings out a poverty report also. The World Bank brings out a poverty report. As per the World Bank, today the extreme poverty is $3 per day. Please note down, $3 per day. $3 per day hochi bartan hochi World Bank criteria. Eta hochi 2021. 2021 re basis the question asigala je World Bank ro what is the extreme poverty rate. ताले 2021 रे सेटा थिला केते $3 ता पूर्वरु थिला $2.15 किंतु आरंभ होइतला $1 आरंभ होइतला $1 रु 60 जोटा डॉलर ते थिला बर्तन सेटा $3 हेछि. Okay, now please note down, as per the latest report of the World Bank, which is based on consumption survey of 22-23. Please note down, समस्ते भावंती जो वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट देइछि तांकर वर्ल्ड बैंक लोक आसिकरी एटी सब कलेक्शन करी जाइछथि किछि नै सेमती सेटा आमे जो कलेक्ट करछु से डेटा बेसिस रे सने करिसथि बुझलो तो. सो द वर्ल्ड बैंक हैज फाउंड, प्लीज नोट डाउन, जे इन 11-12 their assessment was that India had a extreme poverty of how much? 27%. जोटा 21.9% कहउतला किए कहउतला तेंदुलकर कहिछि सेटा को समान 27% कहिसथि. Please note down, which is closer to Rangarajan committee. Are you all getting me?
they say that it has come down to 5.3% in 22-23. And they have also said that about 250 million people have moved out of extreme poverty. Now, for them, please note down, for them, the poverty line per year in India is 1944 for how much? Urban area, that means about 65 rupees. Now, baki 1632 for urban area. Hala, so now what I have done, it would be photo nija. What I have done, Deepak gote table kar deechi. So at a glance, तमें तो note करचो पिला बने, एमती सबू table रे note करतो हूँ तो easy हवो. Remember one thing, जितने बाजू करी पढ़ी बो, तुमको data मिलना difficult हो. सबू बेले तमें capture it in data. Just see, दांडेकरत कितने कही थला 15 22.5, 60 61 रे कितने poverty below 48%. तेंदुलकर 12.7, 17.37.5. तापरे तेंदुलकर एटा होची 11 12 रे कहला. बुझ पड़छु तो एमती करके रखियो ताले तुमको जमा डिफिकल्टी होबनी हैला. They have given a uniform. They have given a uniform. Actually, it's a very, very good question. It's a very good question. The percentage of people in rural area is very low globally. Globally, the percentage of rural people would be about 20%. Urban hochi 80%. So therefore, mane jimte amara rural ta besi hochi 70-30 hochi. Kintu if you look at the globe, say for instance America, it's a very, very good question. America, 95% hala tamara urban, 5% hala tamara rural. So average rural area hala around 20%. That is what India is trying to move at. Even Odisha, because it's Odisha, jota sir padhute tum kali, because it's Odisha, we are trying to move towards that. आमे वर्तमान 70-30 रे अच्छे आमे सेटा को माने उल्टे गिरी आमे 30-70 हाउ चेष्टा करछे. बुझछु तो एमती करी तुम सब डेटा उडा सब बुझले कि पिला माने कर दो. नाउ व्हाट इज द हां इस डेटा केमते कराई देखो. परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन एटा अगेन से भला मु डेटाटा कर दीछि हैला. तापरे आमे प्लीज नोट डाउन. नाउ the SDG, please note down, the SDG is looking at multi-dimensional poverty. आमे जो बाद विवाद रही कैलोरी करिवा, गुड्स एंड सर्विसेज करिवा, रिकॉल पीरियड करिवा करे नाइ एडा सब बाजे. Multi-dimensional poverty, the concept was mooted in 1995 by Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs जेते बेले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहले से कहले जो कहले जे हम जो पुअर बोली कहूचे कोटा पुअर cannot be defined in terms of how much money they are, how much they are eating, whether they have a roof over their head. Se कहले नहीं, so therefore we have to look at poverty in 3 major dimensions. What are the 3 dimensions? Health, education, और living standard. कहाँ रेटा रे कि गोटा पॉजिटिव चले हाँ ठीक है हाँ बुझी पड़छ तो कथा गुड़ा पिला बुझी पड़छ तो. So poverty for Jeffrey Sachs, he wrote a book called, what is the book name of the book? Give him a big hand. End of poverty. End of poverty से पहले poverty is not a singular concept. Poverty is a multi-dimensional concept. You may be highly educated, but you may not have a house. Are you getting my point? So please note down that the weightage in all the 3 parameters is same, 33%.
Please note down. Question asiva whether the weightage is different, health, education, living standard, kintu the tinta kar weightage hochi 1/3, 1/3, 1/3. Many people find this very flawed, that living standard should have a higher weightage, but that is how it is. Health economy, please note down. Nutrition out child mortality, not maternal mortality. Please note down. तमे मने मने सबुड़ा को जदि पढ़ी देबो चाइल्ड मोर्टालिटी आ मैटरनल मोर्टालिटी गोटे ऑप्शन आसीबो तमे सेटा को मार दबनी. It does not include MMR. Please note down. Health ray, it does not include MMR. It includes only IMR. Education ray, please note down. Years of schooling and what is your percentage of attendance? Please note down. एगुड़ा टिके मन रख खाली भावनी जे हाँ तीनटा है गला तो एमते फसी जीव कौन जे जो एमडीजी रे एजुकेशन रे कौन कौन पैरामीटर रहउछथि पके तो या संगे रे कौन बुझो तो कथा. So you must be very careful about all this. Living standard, please note down. Cooking fuel, please note down. Sanitation, safe drinking water, electricity, तापरे हला तमरो फ्लोरिंग हला इटा हाची हाउस प्रॉपर हाउस और एसेट्स एडा हला तमरो ए फ्लोरिंग जोडा करची सेटा होची पक्का हाउस. फ्लोरिंग हला पक्का हाउस, नॉट कच्चा हाउस, पक्का हाउस. So please note down, in living standard, in assets, please note down, the assets, they make a difference between moving assets and fixed assets. Moving assets and fixed assets. Moving asset hala scooter, cycle. Fixed asset hala land and property. Please note down, asset trade dita katha hala. You may be having a scooter, but you may not have a piece of land. So asset includes both moving asset and non-moving assets. जितना आसिबो क्वेश्चन आसिबो टिके केयरफुल हो तो एवडा सब. Now please note down that as per the World Bank, ध्यान दियो, multi-dimensional poverty has come down from 29.2% to 11.28%. एवडा का 100% ए डेटा उडा का मन रखियो. गोटे खाता कर इकोनॉमिक्स पई जहा रिलेवेंट डेटा उडा को से जेमति छिबो हला ठीक है जेमति बुझलो तो. Now please note down 13-14 hela NFHS 4 survey. Please note down NFHS 4 survey. 11.2 hela NFHS 5 survey. NFHS survey is conducted every 5 years. NFHS survey केते वर्ष रे हुए? सेंसस से जिम 10 वर्ष रे हेल्थ सर्वे होची हमरो प्रति 5 years रे हला. Now please note down that there is wide variation. While we are केते होचे हम कहूचे हमर 11.8% होचे हमें बहुत खुशी होचे. Please remember one thing very clearly, friends, that the MPI differs from place to place, state to state very widely. तमे जेहेतु फाइनेंस अफसर हबो, ओएस अफसर हबो, you are concerned about your poverty levels in your own state, in your own district, in your own block. So now please see Kerala, it is 0.48. Multi-dimensional poverty is around 0.5. Tamil Nadu, it is 1.4. Bihar, Mera Bharat Mahan, 33.7. Gujarat, 18.6. Odisha, 15.7. West Bengal, Didi Kala, Mugai, Kom Ravi, 21.4. Are you all getting me? So please, whenever you give an answer,
जेतबे आमे से मैक्रो डाटा टा कहूचे दीपक, when you are talking of macro data, you must not look at micro statewide data. That's very, very important. Now we see how this is a very important data. It has been here. Now we'll see how deprivation, how deprivation percentage has changed between 13 to 14. आमे जो NFHS multidimensional index करिचे, देखो किमिते आमे डाटा रे आमे बुझे दोचे, पूरा क्लियर है। फर्स्ट है न्यूट्रिशन रे केते थिला, what are the percentage of people who are malnutrited, how much it has come down. So it has come down only by 6%. So please note down, malnutrition is a concern. All India level rate. अरे बुझो कि नहीं, malnutrition is a concern. Maternal health, again it has come down from 22.5% to 19.1%. Cooking fuel, please note, cooking fuel is a very, very major area. जो थे एबे भी about 44% people are deprived of. This is based on data released by NITI Aayog. NITI Aayog गोटे जो लेटेस्ट डेटा रिलीज करिछि से बेसिस रे ए डेटा उडा को मुनेइछि बुझो तो कथा दे हैव ए डैशबोर्ड इन द डैशबोर्ड दे ब्रिंग आउट व्हाट आर द sanitation देखो एबे भी 30% हाउसिंग we have not done very well 45% are still deprived. Now where we have done very well is electricity. Just see 21% ru kete hichi 3.3%. Drinking water also we have done fairly well. Only 7% are deprived. Bank account only 3.7%. So को रे भलो करछे, बैंक रे, इलेक्ट्रिसिटी रे, वाटर रे एडा भलो करछे. Even maternal health रे किंतु आमे बाकी कुतरा भलो करने nutrition, cooking fuel, sanitation, housing. They are the area we need to concentrate. Now let us see what is the situation. What are the situation in different states? About 3 years back, about 4 years back, a book of Naveen Patnaik was released. It Mayfair Hotel. I was part of that meeting. So Seithi Prabhu Chawla, ji amaro Indian Express editor, India Today agor editor thile. So he asked him, release pare, what is his major contribution to Odisha? Se kale poverty reduction. Se kale from 57%, I have brought it down to 15%. Please note down, this is a major contribution made by me, made during my tenure as a chief minister. Bihar leads 33.7. UP, there is a sizable reduction. Please see, UP. Tamil Nadu, the reduction is very low, very good. 39, they are doing well. Maharashtra, again, they have reduced. Gujarat, they have reduced. Andhra Pradesh has done very, very well. Andhra Pradesh. Punjab, 20 thila, 4.7. Kerala, of course, I have already said that. Bujipur Chota. So therefore, one is estimating poverty. The other is looking at the multi-dimensions of poverty and then looking at the state data. Now, so the final slide on this is, what are the poverty mitigation programs? एवढा का सार तुमको डिटेल रे करिवे poverty mitigation program. जेतु poverty is a very important area for the government. So first scheme hela, the first scheme hela ICDS, Integrated Child Development Scheme. 1975 मसीहा तबे कोन करिवो. She has a successful national project she has done on ICDS 1975 रे जोटा हमर अंगनबाड़ी होची. केतटा अंगनबाड़ी अछि भारत रे, केते लक्ष अंगनबाड़ी अछि? 22 lakhs अंगनबाड़ीज. So केते कवरेज तार होची? Any guess? How many children
are getting benefited out of Anganwadi. Kete pila satre goes. Kohatike pakku pakku munda no kari kohatike 70 million. Please note down, these figures should be there with all of you. 70 million children. How many women are getting benefited? How many women are getting benefited? 19 million women are getting benefited. कौन डेटा हला टिके मन रख 22 लाख तुमर होची अंगनबाड़ी हला 70 मिलियन पिला सिटी पढुचंती खाउचंती पढुचंती केते 70 मिलियन 7 कोटी पिला 1.9 crore women को माने सब all breastfeeding mothers, lactating mothers, they also are fed there. कौन काम सब ICDS रो कहलो? Anybody तमे को you tell me what are the work of the ICDS? कौन काम वाला? को एगुडा तमे न कहले किमति हबो वेस पडिबनी जमा मिलिबनी. There is no question. कौन तार मेन काम को? Providing nutrition or extra nutrition? Extra nutrition, not nutrition. Providing extra nutrition to whom? To children and nursing mothers, lactating and nursing mothers. Is the scale same? Is the scale same? Scale is different. Please note down. Is the scale same? Nursing mother ra besi higher scale. बुझी पड़छ? अरे जो स्त्री लोकर पिला हेची से समान तो दबो कि तमे? ताको अंडा बेसी दबो ना नहीं, खीर टिके बेसी दबो ना नहीं. So therefore please remember जे basic कौन तार objective हला ICDS रा first हला provide additional protein to whom? Children and lactating mothers. Second कौन हला? Providing early childhood education. Early childhood education कोथरे अच्छी तमरा constitution रे? Very good. Give him a big hand. Article 45 अच्छी. Early childhood education and care. को article अच्छी? Article 45 रे. हैला? तापरे what is the third job of ICDS? What is the third job of ICDS? Sir, vaccination. Very good. Again, institutional delivery. Give her a big hand. Give her institutional delivery. How कौन हला? Sir, vaccination. Primary healthcare. Yes, primary healthcare. Yes, primary healthcare. Primary healthcare. Primary healthcare. Institutional delivery. आओ early childhood education. तो तमें किछ नहीं से जो बही करचंती से बही रे पूरा सब अच्छी. तेबे टिके तमें नोट कर दियो. ए जो फिगरटा कहली 70 मिलियन there are 19 million women. बुझलो तो एउडा टिके जस्ट रखता. सेकंड प्रोग्राम हला IRDP. थर्ड इंपोर्टेंट प्रोग्राम प्लीज नोट only please note down the important. What हला public distribution system was introduced in 1992. Our save समरे हमरा FCI मध्ये क्रिएट हला. सो सेठी हमें लोकको को जो 2 टंका रे चावल दिया होची जो आमर नेशनल फूड स्कीम अच्छी एवडा का सब से अंत्योदय अन्न प्रकार मिड डे मील मनरेगा होची सबटू बिगेस्ट पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम. प्लीज नोट डाउन द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी इन 2025. प्लीज नोट 25 रहला 15.99 crore family. 15.99 crore family. एटा करोटा छाडी जाईची. 16 कोटी फैमिली रजिस्टर करचंती फॉर मनरेगा. बेनिफिट अवेल करचंती 40%. प्लीज नोट डाउन 2025 रे 16 कोटी फैमिली रजिस्टर करचंती टू टेक बेनिफिट ऑफ मनरेगा किंतु एक्चुअली बेनिफिट नहीं चंती केते 40%. एटी मन रख दबे कुछ तो कथा. सो एट हला पावर आमे वर्तमान जिबा पिले आमे जिबा प्लानिंग को हला. हमर फर्स्ट मॉड्यूल टा बुझी गलो सब? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मो घंटा चालू. हां ठीक अछि.
So now we come to planning our NITI Aayog. Again, a very important area. So I think प्रथम मन रख जे आमर Russian Revolution in 1917. Russian Revolution in 1917 brought in an alternative economic system, which is socialism. आउ से माने गोटे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कले जो थरे बुझल तो there was unprecedented growth in Russia. Okay, and Nehru visited Moscow in 1927, and in Lucknow Congress and in Karachi Congress the decision was, please note down, 1931 re tame jo history poducho 1931 re for the first time the Congress made a resolution that the state will control key industry. 1931 Congress. In fact, jetebale tar chairmanship thila kahara Nehru thile. So when he declared this, Nehru, Gandhi was very unhappy with him. Gandhi did not attend that Congress meeting. So when he came back to him that who gave you the authority, Nehru just jaike astan Russia se kale je na ame control kare sub industry. Okay. Now please note down, in 1938, please note down, in 1938 a National Planning Committee was constituted, which was headed by Subhash Bose. Please note down, Subhash Bose. Our Seithre Viswesvaraya, je ki so greatest engineer of the country, our Meghnad Saha, they were the members. Please note down, Meghnad Saha, nuclear physicist, Viswesvaraya, and so semanakar main objective rahila rapid industrialization. Please note down. Then the Bombay plan, but lekhini, Bombay plan was in 1944. Bombay plan was also in 1944. Bujiporso National Planning Committee ke bela 1938 re setebele mate semane कहले जे हमें rapid industrialization करिबा. 1944 जो Bombay plan हला, again the thrust was rapid industrialization. All this was based on what was happening in Russia. Russia रे एते जो ताकर जो planning ताकर जो GOS plan थिला, जो central planning थिला, it was so successful that all these committees were impacted by this. So Soviet Union रे 5-year plan start हला 1928 में. Please note down. The 5-year plan actually start हला 1928 में. That has so Planning Commission has been closed in Russia in 1991. There is no Planning Commission. There is no GOS plan. GOS plan hochi tankar Russia ro GOS. So large scale industrialization. Please note down. Emphasis on military industry capability. Please note down. One of the objectives of Soviet Union was building military industry complex. So when I military industry complex industry sangre je no badibo tahale ame kebe powerful country hoboni. और बुझो तो कथा आज तमे देखो किए चैलेंज करछि अमेरिका को, रशिया और चाइना चार को बुझ पड़तो तका मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्ट्रांग. ए जो सेंट्रल प्लानिंग टाको चैलेंज के कला हाइक, Frederick von Hayek. बुझला तो Frederick von Hayek चैलेंज कला. I have already, so in 1944 he wrote a book, please note down, Road to Serfdom. आजकल तो बही ना अनेक समय आसुची रोड टू सर्फडम. प्लीज नोट डाउन, रोड टू सर्फडम. खाली से जो दास कैपिटल वेल्थ ऑफ नेशंस मन रखले हबनी. रोड टू सर्फडम he wrote in 1944. This is a book which has sold in millions. It is one of the fastest selling economics books. Frederick von Hayek wrote. He was an Austrian economist. So he was a bitter critic of planning. से कहले जे तंकर ऑब्जेक्टिव थिला, please note down, decentralization, free competition and free pricing. Please note down. The concept of Hayek was that planning should be decentralized. It should be given to individuals, individual business houses,
there should be free competition, and there should be free pricing. These are the objectives of Aayog. Planning Commission started in China in 1953. But believe me, it is still there. The Planning Commission in China is still there. They bring out 5-year plans every 5 years, you know. So India's Planning Commission started in 1950. It was based on Feldman-Mahalanobis model. जोटा को हमारा सार कहउचंती दीपक सार कहउचंती नेहरू महालनोबिस मॉडल सेटा एक्चुअली होची फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल. Feldman was responsible for 5-year plans in Russia. Feldman, okay, Feldman. Okay. Now, why there should be planning? देखो अनेक समय क्वेश्चन आछो तुम्हारा प्लानिंग ऊपर तमे खाली नीति आयोग धरले जदि प्लानिंग रे क्वेश्चन आछो तमे एकदम बुरी तरह फसी जो. So what is the major thrust of a planning commission? Please note down. It sets macro targets in terms of what? Growth, employment and inclusion. Growth, financial inclusion और employment. ये तीनटा मेजर होची. How much would you grow and how do we maintain intersectoral balance? माने agriculture, industry और services भितरे how do we maintain a balance? And they bring out input output table. 64 sectors are taken. Please note down, 64 sectors are taken. Each sector रे से मैंने calculate करंती जे कौन input हले कौन output हला. Input output model is based on the theory of Vasily Leontief. Please note down, Vasily Leontief. W-A-S-I-L-Y, Vasily Leontief. L-E-O, Leontief. Input output theory was mooted by Vasily Leontief. He is a Nobel Prize winner. I will economics पढ़ुतलु प्रथमे Leontief model टा वो तले IAS interview ପାଇଁ गली मते सने first question पचाले, do you know what is Leontief model? I said yes. तो बुझो तो सिर्फ कहले कौन Leontief model टा इनपुट आउटपुट मॉडल टा कौन. सो आमे जो प्लानिंग कमीशन जो कहूचे जो ग्रोथ टारगेट्स होची दैट ग्रोथ टारगेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट कोरिलेशन इन 64 सेक्टर्स. 64 टा सेक्टर नहीं करी हैला तीन डीटा फैक्टर नहीं कौन फैक्टर कौन आला लेबर और कैपिटल. प्लीज नोट डाउन डीटा इनपुट फैक्टर नेले तारा आउटपुट फैक्टर नेले 64 सेक्टर रा टोटल कंबाइंड हेले सेइथिरे तमो ग्रोथ होतला. बुझलो तो खाली ब्रॉडली तमे मन रखो एतिके. प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. माने हाउ ग्रोथ वाज कैलकुलेटेड. ग्रोथ वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन व्हाट? इनपुट आउटपुट एनालिसिस ऑफ 64 सेक्टर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. ठीक है, अध्याय तुम कहि दोछि तार तमरो ଗୋଟେ क्लैरिटी रहइबो. We also had something called plan allocation. Please note down. Planning Commission allocation करिवो. जो fund आसी तरह allocation करिवो. Plan allocation. So that allocation used to be about, please note down, used to be around 30% of the total budget. Our the total budget was 53 lakh crore. About 30% will go to plan allocation. अरे बुझी पड़छो प्लान allocation हला capital assets पे. Please note down, plan allocation माने all allocations for creating assets. बुझलो तो आमी जो capital budget बोले कहूचे से capital budget is nothing but a plan budget. You plan for that. You plan to create an asset. Please note down, एटा अनेक समय prelim रे आछि Gargill Mukherjee formula. Please note down, Gargill Mukherjee formula. ये जो 30% प्लान allocation होची पिला माने that used to be based on Gargill आउ प्रणब मुखर्जी का मॉडल of 1991. से फॉर्मूला रे होची, प्लीज नोट डाउन, वेटेज होची पॉपुलेशन को 60%. एटा टिके नोट कर रखो जेमति एटा फाइनेंस कमिशन रो नुह, एटा प्लानिंग कमिशन रो allocation केते हला
30% weight होची population को, 25% होची per capita, 7.5% ला fiscal management और 7.5% ला special programs. Okay, बुझी पड़छो? ए basis रे अगुरु allocation करूथिला. Please note down, there were a number of centrally sponsored schemes. Central, सुनाओ, गोटे लेखा central schemes, out of centrally sponsored scheme. Central scheme are schemes which are directly created by the center. 100% funding is done by the center. In the centrally sponsored scheme, please note down, in the centrally sponsored scheme, it is the fund is shared between state and the other. And for almost all states, it is 70-30. For Northeast, it is 90-10. Please note down. For Northeastern state, it is 90-10. 90% दबो ये सेंटर दबो 10% सेमान देवे बाकी करना 70-30 हैला. Now important centrally sponsored scheme हैला धरा प्रधानमंत्री जल आयोग योजना और आवास योजना health mission SSA एवढा सब ताऊ के चटे दबो this एवढा टी चटे दबो. Now please note down, in the planning commission we had a program evaluation organization and there was a perspective plan division. मुझे प्रथमे join कली मो life रे 77 रे I joined the perspective planning division. जो नीति आयोग जो सी planning commission योजना भवन रे, that was my first job in 77. That was my first job after I completed my training 77. Now एवढा काहीं कोची आमे जो you must understand the contrast between planning which was done earlier and the arrangement which we have now to the NITI Aayog. Are you getting my point? You must be very clear. Now please note down that every plan had a thrust area and it had a growth target. So in this table, what I have done, I have summarized the whole thing. जोटा तुमको 10 पेज 12 पेज रे हबो सेटा को मु गोटी पेज रे सम अप करछि. एटा बुझि तो तुम पे दी दिन हम खाली काम करूछि. किमिति एट ए ग्लांस तुम बुझियो बजट एट ए ग्लांस तुम पाइबनी कोठी एडा का मु तुम मजारे कहूनी तुम मुंडा पिटी दियो पछे बुझले कि तुम पे मु कहली एका से कर दिए ताल तुमको किसी डिफिकल्टी हबनी. फर्स्ट प्लान रे कोन टारगेट हला एग्रीकल्चर. प्लीज नोट डाउन एग्रीकल्चर केते टारगेट थिला 2.1 अचीवमेंट केते हला 3.6. सेकंड प्लान रे हेवी इंडस्ट्री केते टारगेट थिला 4.5 हला 4.2. थर्ड प्लान प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन एक्चुअली को प्लान सेल्फ रिलायंस करथिला. सेकंड प्लान थर्ड प्लान फिफ्थ प्लान सेवेंथ प्लान बुझी पड़छ सेल्फ रिलायंस सेते बेले केते केते टारगेट थिला केते हला पूरा लांडू पूरा आत्मनिर्भर भारत स्टार्टेड इन दी थर्ड प्लान. बुझी पड़छ केबे थर्ड प्लान निकला 61 रो 65. प्लीज नोट डाउन 61 रो 65 61 रो 65 आत्मनिर्भर जो होची हाँ हाँ वार हला 62 रे तबरे 65 रे हमर पाकिस्तान से युद्ध हला. तेबे very good answer. Please note down, fourth plan started in 69. From 66 to 69 was plan holiday. जो सार कहउचंदी जो युद्ध बुद्ध हला हमको हला से कहले नहीं प्लान छाड़ो भाई टी वर्तमान देश को संभालो. So fourth plan, please note down, 69 to 74 was to ensure fiscal stability. Please note down fiscal stability. 5.7. So please note down from 61 to 74. Please note down. It's very important for all of you to know. Remember, India faced a very difficult economic time. While we own the Bangladesh war, I mean, Bangladesh Yuddha, kintu India faced the severest problems from 69, 66 to almost 74. आमे सेते पाठ पढुतुलु. सो आमे सेते बेले खाली देशर दुर्गति कोन होतला सेटा खाली बुझुतुलु.
when you are going for economics examination, कौन कहते हैं? Fifth plan, please note down. Fifth plan hela for the first time, Mrs. Gandhi said poverty alleviation. Sixth plan rehla garibi hatao. Poverty became the theme only in the fifth plan, and garibi hatao जोटा के हमें कहूचे SDG 1 रे, SDG 1 रे कहूचे no poverty सेटा हिता. तो कहते हैं दला 5.2 रे 3.6. Seventh plan होची food grains. Eighth plan हला mark, please note down. Eighth plan हला 92 रो आरंभ हला सेते बेले हला कहले जे हमें मार्केट को दबा, मार्केट ओपन मार्केट. ओपन मार्केट रे कोन हला टारगेट केते रहला देखो पहले केते हला. Do you see that? A data गुड़ा खाली मने रखा पे नहीं. You have to see the trend. The moment India became open, the growth became also higher. Do you see that? तापरे हमें, please note down, from 10th plan, the whole thrust is rapid growth. Please note down, rapid growth. Rapid growth 8 कले, 7.6 कले. 11th plan, please note down, 11th plan started the concept of inclusive growth. Inclusive growth रे की include हमें मत ये कही दबो पांचटा ताकू 100 टन देबी. Inclusive growth रे कहा कहू के include हो. Women children कहले तुमको सेठी कहबो बाहर जा. काहे केटा कहूची inclusive growth जो कहूची, there are allocations, specific allocations for them. Please note down, inclusive growth माने there is specific allocation in the plan for them. Please note down, specific allocation for them. Kotela SC, ST, you have a sub plan for them. जो plan हबो, there is a sub plan for scheduled caste, there is a sub plan for scheduled tribe, there is a sub plan for women. Please note down, women. এই তিনটা ক্যাটেগরি হেলে তোমার ইনক্লুসিভ গ্রোথ রে. অনেক লোক কোচন্তি মুসলিমস আসিবে, চিলড্রেন আসিবে, সেটা নুহ, বাজে কথা, মাইনরিটি. এই তিনটা ক্যাটেগরি প্লিজ নোট ডাউন, এসসি এসটি আউ কে কইলি এমানক পাই जोड़ा हम जेंडर बजेटिंग. प्लीज नोट डाउन, जेंडर बजेटिंग. अरे बुझु कि नहीं. आउ 12th प्लान सुनो, 12th प्लान हला आहुरी मोर इनक्लूसिव ग्रोथ. तो आमे 10th प्लान रो माने 8th प्लान रो आमे टिके निश्वास मारिया आरंभ कले ग्रोथ बढ़िए. Why I am showing this? That today when we are having a NITI Aayog, ना रही बाउंसी बाउंसो ना बजे बांसुरी किरे ग्रोथ. So there is no accountability. केते हबो केते न हबो किसी ठिकाना नहीं. बुझो तो कथा. Anyway, तो प्लीज नोट डाउन जे प्रत्येक एरिया रे हमरो टारगेट थिला, जीडीपी रे थिला. प्लीज नोट डाउन एरा. दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग. कोन हला जे यू हैव टारगेट नॉट ओनली फॉर जीडीपी, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सर्विसेज, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर करंट अकाउंट, थिंग आईसीओआर एंड टीएफआर. फॉर ईच ऑफ दिस द टारगेट्स आर देयर. बुझो तो कथा. Now, what has been the impact of planning commission? Please note down, impact of planning. It is अनेक समय short note रे आसीबो. ए जो कौन थला तार, हाँ, कौन तार impact और कौन तार negative features. गोटे पेज रे ता तो 200-250 वर्ड लिखिया पे तमे. First है we have built enormous capacity in heavy capital goods sector. Please note down. We have built what? Enormous capacity in what? Heavy capital goods sector. In steel, in BHL, HMT, तापरे तमर heavy engineering रांची, जोठी हमारा धोनी आस्ची, बुझे तो धोनी रा वाइफ तारा जो एचएस रा तारा जियो से, बुझे तो. So steel रे, BHL, HMT, IIT, IISc, और dams, all kinds of multi-purpose dams.
So huge capacity build-up is there. From buchho to katha. Steel. Steel kahinki why steel is important? Because Germany, Hitler asla, se mane Hitler kala mu to nishcho world ko win karibi karan the total steel production in Germany was more than the steel production in the entire world. Are steel ru tank hava, steel ru rifle hava, steel ru chamacha hava, steel hava. Seitar upon Lenin कहला electricity is the key. Please note down. तमरा आज internet किए इतला सेतर होतला किए steel of electricity. Okay. तापरे हमारा difficulty आरंभाला nationalization of banks and all this created inefficiency. Please note down. The main root cause of India nationalization कौन हला जो inefficiency रहेला PSU. And more, the growth rate was much less. Growth rate was about 3.5% compared to almost all Southeast Asian countries, which witnessed a growth of 7 to 9%. Please note down, almost every. So while all the Southeast Asian countries adopted free market economy and they were having a growth of about 7 to 9%, India was few. Now, please note down, very important. Insignificant dent on poverty and inequality. This is again a major criticism of Planning Commission. Overprotected and uncompetitive PSUs. Overprotected, the public sector ko protect karo. Parallel monitoring, delay and lack of accountability. Inadequate appreciation of state initiative. माने आमे जो गोटे टॉप डाउन अप्रोच रहिबा सेथरे you are not appreciating efforts being made by states. So that was another very important, and politicization in funding. This was also a major criticism of Planning Commission. Now we come to the last segment where I'll spend a little time. And both me and Deepak will write an article on this. NITI Aayog at the rate of 10. Please note down, NITI Aayog came in 2015, but it started functioning only after 2018. Please note down. Kahinki na 12th plan ended in 2017. You can note karo eta ko very important. NITI Aayog, though it was set up in 2015, but it started functioning from when? From 2018, because they could function only after completion of the 12th plan, which was 2017. So what is the project? So it is supposed to provide directional and policy inputs, strategic technical advice, and foster cooperative federalism. Please note. So, tinta kotha. Gota hela cooperative federalism, gota strategy, and it influences policy through what? Coordination, monitoring, and innovation. Please note down. So one of the, I looked through the NITI Aayog performance, one of the things that they have done, that it is a organization very rich in data, extremely rich in data sharing. So it is influencing policy through coordination, monitoring. Now please note down the two flagship programs under NITI Aayog. Please note down. One is Aspirational District Program, ADP. Our second hala Atal Innovation Mission. Atal Innovation Mission. They are the two flagship missions, two flagship programs of NITI Aayog. Please note down, it also monitors the SDG targets. SDG target kon achi and what is the performance of different states. It brings out. Kana amar SDG target saribo kebe 2030 re. It is monitoring that. Tapare very major mission is the Jal Jeevan mission. And then you have what is known as Poshan Gyan. It is a national depository on health and nutrition. So it is giving data
to the stakeholders जे कोठी केते anemia अछि कोठे अंडर न्यूट्रिशन होची सो ए जो this particular platform पोषण ज्ञान तो आज पर पोषण ज्ञान टा कोन पोषण ज्ञान is nothing but a platform which provides information on health and nutrition traits केते उडा पिला अंडर न्यूट्रिटेड अछंती केते को पिला को स्टंटिंग हेची so this data is available on this site. Now we come to a data program ko. So as I told you, the planning, the NITI Aayog actually started functioning from 2018, and the first program that it started was the aspirational district program. Aspirational district program. Now Bharat re total district है कि ध्यान दे रहे भारत रे total district है 739 districts. Out of 739 districts, please note down, 112 districts have been taken as aspirational districts. They are the most underdeveloped districts. Odisha ra 10 district aspirational districts. 10. Please note down. These are all tribal areas districts. Keunjhar, Koraput, एडा फुलबाणी एडा का सबु होची इतरे बहुत एडा सबु होची एस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट 10टा डिस्ट्रिक्ट अछि तांकु तमे टिके भलो गिरिटा को चटे दबो टिके ए एस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हैला नाउ प्लीज नोट डाउन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम is based on 3 C's: convergence, collaboration, and competition. Convergence हला जे ए जो प्रोग्राम होची ए प्रोग्राम रे there is a representative from NITI Aayog, there is a representative from the state, and this district is represented by the DM. Please note down. So there has to be a convergence between the 3 of them. किए state planning board, NITI Aayog, and the DM. अरे बुझो कि नहीं तुमने it हला convergence. Collaboration कौन? Now, aspirational district program encourages collaboration with NGOs. Please note down. It encourages collaboration with whom? With the private enterprise and NGOs. जो PPP, please note down. PPP is a concept within the aspirational district. बुझी पड़छो? गोटे हला तमे convert करिवो, आउ गोटे हला aspirational program करिवो. तापर competition कौन हला? Now, so they have identified, please note down, they have identified 49 performance parameters. Please note down. They have identified 49 performance parameters. 49. And they have 5 areas. Ketra area rahela? 5 area. Kaun area rahela? Health, nutrition, please note down, health, nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. कौन कौन रहला पिला माने कि भलो के रखो मन रखो एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, फाइनेंशियल इनकम, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रा. एडला पांचटा थीम. ए पांचटा थीम रे 49टा परफॉर्मेंस पैरामीटर रहला. ए भितरे सबु डिस्ट्रिक्ट को रैंक करा दियो. से रैंकिंग बेस रे तुमको पैसा मिलियो. अरे बुझु कि नहीं धर आज बलांगीर से परफॉर्मेंस पैरामीटर रे 100 रु 60 रखला, कोरापुट रखला 40, ताले कोरापुट लेस मनी पाइबो. बुझिरो तो? अरे अरे गेटिंग नहीं जो पैसा ना समान रखी चंती, दैट मनी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन योर स्कोर एंड दैट इज बेस्ड ऑन 49 परफॉर्मेंस पैरामीटर. अरे बुझु कि नहीं सब ओडिसा रे ए जो डिस्ट्रिक्ट गुडा किए 3 कोटी पाइची किए 4 कोटी पाइची किछि परफॉर्म करनांती. खाली गालुआमी घरे बसी खाली दारू पिउचंती, खाली टीवी देखुचंती. रैंकिंग इज बेस्ड ऑन, प्लीज नोट डाउन, फ्रॉम लास्ट ईयर दे हैव स्टार्टेड व्हाट इज नोन एज एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम. 5टा ब्लॉक को भी तमे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम रखछथि. अरे एगुड़ा पोस्टिंग हे जो सेठी तमे एई काम रे रहबो सब एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम.
Now, please note down, there is a wonderful study by Professor Porter and Professor Stern. They are both from Harvard Business School. Harvard Business School. A dijon study karchanti how this aspirational district program is functioning. It's a wonderful study. Today I read it. ମୁଁ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଛି କଣ ଯୋଉ କଣ କହିଲ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ସେ ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଅଛି ତ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଗୁରୁଦେବ ଟିକେ ପଠା କିଛି ଷ୍ଟଡି ଫଡି ପଠା ହଁ ସେ ପଠା ଅଭିସାର ହଜବେଣ୍ଡ ହଁ so please note down ସେ କହୁଛି ଯେ two areas please note down there are two areas in which the aspirational districts are not doing well कौन कौन है गोटे है एग्रीकल्चर गोटे है फाइनेंशियल इंक्लूजन आ गोटे है स्किल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन आ प्रोडक्टिविटी एथरे 80% पछेची कोथरे एग्रीकल्चर रे बुझी पड़छो फाइनेंशियल इंक्लूजन रे 70% स्किल रे करची 65% कौन बुझछो तो से कहे जो सक्सेस हैज बीन अचीव्ड इन लो हैंगिंग फ्रूट्स ये छोटे छोटे जिनस रे बट जोटा स्ट्रक्चरल चैलेंज रोची इनकम प्लीज नोट स्ट्रक्चरल चैलेंज रोची लाइक इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट नॉट मच हैज बीन अचीव्ड कौन कौन तार रहला ताले माने व्हाइल दिस इज अ गुड प्रोग्राम इट्स अ गुड प्रोग्राम बेस्ड ऑन गुड premise but when we look back at it after 7 years or 6 years, we find. So please note down another thing the committee has pointed out. If you focus on economic parameters, that will not lead to inclusive growth. Please note down. They have said that social challenges can be a stumbling block. Please note down. आमे जो कहूचे जो holistic approach towards development मजू सर जो holistic एटा होची जे तमे खाली पैसा पैसा कले डेवलपमेंट हबनी तमर जो सोशल इनिक्विटी अछि तो सोशल ग्रुप्स अछि तमर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो माने अछंती वुमेन अछंती जो माने सब लेस मुस्लिम्स अछंती बुझलो त सो ए जो सोशल चैलेंजेस सुडा को तमे जो न रखिबो एटा आंद्रे बेते थे त ना जानि सुनछ के आंद्रे बेते की से आंद्रे बेते से मरी गला बुढ़ाटा मरी गला एबे 92 वर्ष रे मरी गला से इंडिया रा सबुठो नंबर 2 सोशलिस्ट थिला is a great sociologist आंद्रे बेते देखो से इंजीनियर को मुंड टू करछि जानि छि तो पेपर रा जम्मा पढु न तबे आंद्रे बेते लेखा आंद्रे बेते कास्ट क्लास एंड पावर अरे केतल बही रे आसी जीवो कास्ट क्लास एंड पावर से एबे मरि छि ए तटका मरि छि से ही इज यूनिवर्सली रेस्पेक्टेड एबे विकेट जाई छि तारो ए जस्ट मासे देर मास तळे तार विकेट ता जाई छि बुझले की से फेसबुक रे सब बहुत लोग कंदा काटा करछन बुझले की मोर से इथे अरे तार आंड्रे बेते होची तार मां होची बंगाली आउ फादर होची फ्रेंच ए वेरी हैंडसम गाय सो 77 रे आमे जाई ताको देखा करथलु मु अरविंद बेरा आ बासु महांती देखा करथलु आमे गोड आशीष बोस ताको देखा करथलु आमे सोशियोलॉजी पेपर रखथलु बुझले की सोशियोलॉजी पेपर रखथलु सेटो आशीष बोस कहला तमे चलो सेटो एको देखा करता आंड्रे बेते को देखा रियो तो ताको देखि रे हम मुंडो खराब है इते हैंडसम लोक झिउडा खाली घेरे की बसछ ताको खाली झिउडा घेरे की बसछ ताको तो कहला सिट डाउन साइबो लोकटा एकदम सेठू कहला जे तमे हम कोन सर हम सोशियोलॉजी दबु कि तुम कोन डिसिप्लिन कोन ना इकोनॉमिक्स दैट डिसिप्लिन व्हिच डजंट बॉदर अबाउट सोसाइटी सेठू से कहला जे तमे गोटे काम कर तुमको दीटा बही पढ़े को से कहला सोशियोलॉजिकल थॉट बाय रेमंड आरन टी नोट कर जो सोशियोलॉजी रखियो रेमंड आरन रहउची सोशियोलॉजी बही रेमंड आरन सोशियोलॉजिकल थॉट आ टीबी बटमूर हला सोशियोलॉजी टीबी बटमूर गोटे लोक से सोशियोलॉजी रो बही लिखला दीटी बही कहले दीटा बही पढ़ी करी तमे सप्ताह पर मते आसो तापरे मु कहबी तमे सोशियोलॉजी नबो कि नाही आमे जाई कि से बहीटा किनी आनलु सला तार जो इंग्रजी ताको सला एमिथि डरखाइम फरखाइम माने मालनस्की फेलनस्की देखि रैटक्लिफ ब्राउन देखि रे आमे कहलु सब गला सला ये सोशलटा धुलिसा थे पढिलो आमे सेठू देखलु जेडा बढ़िया सब्जेक्ट हम इट्स एन एक्सीलेंट सब्जेक्ट सोशोलॉजी इज एन एक्सीलेंट सब्जेक्ट यू वोंट बिलीव both me Arvind Bera all of us scored more than 60% in sociology
माने मोर पचार ताको इंटरव्यू बोर्ड रे जो पिला सब आस्थिले सोशियोलॉजी रो से पिला को एमिति ट्रेन करैथिली जे सेठू हम अनुप दास थिले जे आस्थिले इंटरव्यू बोर्ड को से सोशियोलॉजी प्रोफेसर मते फोन कले कहले अरे सर आपन कोन पढौचंती कि पिला को सब कोठी पढौचंती कि सोशियोलॉजी मु कहले के कोन हला कहले म तो जहा पचली वेवर पचली डखाई पचली सला ओयूटी पिलाडा इंजीनियर पिला सब आंसर करचंती मतलब हाँ ताको टिके इंटरव्यू बोर्ड टिके कर देथली टिके हाँ मु भाबिली सला ये हिलेनी पिला गुडा कोन कहउचंती वेबर डखाइमर डिफरेंस आउचंती वेबर मार्क्स रे कोन बुझी पड़छ कथाडा मु तुमको माने बहादुरी मारी कहूनी बट दैट इज हाउ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड सो हाईली इन इंटरव्यू तो बुझछ तो कथा सेटा होची कारण होची से आंड्रे बेते संगे 77 करथुरो आमे गोटे वीक पके त गोलु आमे कोन सर लवली इंग्लिश एंड व्हाट इंग्लिश सेटू बहुत भलो माने सेटा पढिला पर आमे जानिलो भलो बहिटा कोन बुझु तो कथा भलो बहिर बहि पे किछि पढु न बहिर भलो बहिर मजाटा सेटू जानिलो माने माय आईज ओपन टू से जो 77 ने पढितली पिला माने 78 एबे भी मने अछि ताको पचार दो मो तापर के आईज देनी सोशल देनी किंतु एबे भी मते पचारले मु दि दिन मते मु 60 मार्क काट जस्ट 2 days आई रिक्वायर फॉर पढितले त डीपली पढितले एते सुंदर से ଗୋଟେ बहुत बढ़िया कथा कहला लेख the constitution its statement the constitution may tell you the direction at which the country will move, comma, but the social structure will determine at what pace it will progress. The constitution will tell you the direction in which you will achieve progress. Socio-economic justice habo amka habo, but the social structure will determine at what pace. बुझी पड़छ सोशल इक्विटी जेपन न होईची अरे जो ओबीसी रिजर्वेशन न होइतिले तमे एते पिला आसंते कि सिडुल कास्ट बुझी पड़छ कथाटा सो दिस इज द स्टेटमेंट एट्रिब्यूटेड टू एनीवे so social challenges still hamper the point which I am trying to tell you is आमे जो भाबुचे टेक्नोलॉजी रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके आमे सब ताड़ी पकेबा that is not possible so it hala aspirational district we come to atal innovation mission atal innovation mission atal innovation mission started in 2016 to foster a culture of entrepreneurship and technology. Knowledge networks are being developed in partnership with universities, research institutions. Strategic focus on education, technology, and emerging fields. Frontier technology kurchanti, and this is the only area. Please note down. Allocation is made by the NITI Aayog. Please note down. अनेक समय तुम पूछो जे whether any allocation is available with NITI Aayog. NITI Aayog रे एटा होची केते होची 2750 crores in Atal 2.0. Now through this mission, please note down that we have improved our global innovation index. Please note down global innovation index. We have improved from 48th rank to 38th rank. From 48th rank to 38th rank. माने एइथरे बेसिकली आमे सबु ए जो लैब करूछु करके पिला सब सिखौछु so this is disseminating knowledge बुझला तो so these are आउ गोटे बहुत भलो माने फॉर मी the जल जीवन मिशन यार किए who is the bureaucrat who drove it जे कहि दबो ताकू मु 5 टका दे who was the person who has made a success of this mission is an IAS officer ये होची परमेश्वरन please note down परमेश्वरन he is an IIT engineer he was in the World Bank he is an IAS officer से CEO थिला भी हमरो नीति आयोग रे he is the person who माने नरेंद्र मोदी इतना बाहर को जाए सबु बेले से परमेश्वर को लेके जाए
से ठीक हमर दीपक वाला टी दाढ़ी रखी ठीक पतला ताठू आउ से होची ही इज द गाय नो वाटर मिशन रे तार कंट्रीब्यूशन इज आउटस्टैंडिंग provide safe adequate piped drinking water to every household functional household tap to every household school and health center. Now we have covered around 81.7% rural household. Now please note down, the whole objective is, it is done, it is community led. I mean collaborative, community led. Bottom up. So plan, manage and maintain. So ये जो पानी रो व्यवस्था होची गांव गुडा करे सेटा को तमर जो पीएचडी इंजीनियर जो पैसा खाइबा इंजीनियर से मैनेज करनी सेटा को मैनेज करछन को माने से कम्युनिटी मैनेज करछि ग्राम पंचायत मैनेज करछि आर यू वेरी बट यू आर चेंजिंग द कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द कम्युनिटी आर यू वेरी बट दिस इज अगेन अरे कम्युनिटी करे से माने इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू एंश्योर जे पानी आसुनावा अरे इंजीनियर कौन इंटरेस्ट अच्छी से तार कॉन्ट्रैक्टर पैसा खाइला पर से घरे बसिक आराम रे टीवी देखुची ग्राउंड वाटर रिचार्ज रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्रे वाटर मैनेजमेंट these are all part of Jal Jeevan Mission. Safe drinking water, how to use IoT for water supply monitoring, how to use IoT, these are all groundwater recharge and budget allocation, please note down, is 67,000 crores. Again, this funding is done, Aditya, by the NITI Aayog and not by Finance Ministry. Please note down, this is very important. All other funding is done by Finance Ministry. ये जो 30% आगुरु जो allocation थिला पिला माने से 30% allocation बर्तमान Finance Ministry को होची बुझो तो किंतु एबे से जो से केवल एटा बजट allocation करची के so please note down, I mean our last batch there are some very important reports and studies done by the Planning Commission. First hala the SDG report, Sustainable Development Goal. Every quarter they bring out the progress on each target. It's a quarterly report. They also bring out a trade watch report, quarterly report from 2024. How is the trade functioning? A report this is again a very important report. So it tells you what is the position on exports, what is happening, trades. तापर गोटे बहुत important report हला Fiscal Health Index, which was brought out in 2025. 2025 रे पढैथिल तुमको Fiscal Health Index पढैथिली Fiscal Health Index ताकू बाहर करछि प्रभाकर साहू, he is an additional secretary हम ओडिसा रो लोको ताकू मु डाकिबी, he will take a class हला. So Fiscal Health Index तापरे एथरे ओडिसा what is the Odisha's ranking in Odisha Fiscal Index? 1. Export Preparedness Index तापरे please note down, it has brought out a wonderful report how to have self-sufficiency in edible oil. Self-sufficiency in edible oil. Otherwise, India re edible oil ra बहुत दाम बहुत ला. It was subject to inflation. But now कितने import होतला रे? कितने ton import होतला? 37 million tons. But then hardly we import anything. It was basic. Then it has also made a wonderful study on senior care reform, for senior citizens. So ये जो 5 लाख टका दौचंती हमन को बुढ़ा मन को दौचंती माने आ कुआडे जीवा को दरकार नै 5 लाख दौचंती. So this is senior care reform. It's again a wonderful. Now it has also made very, very good studies how to have PPP in education, housing and MSMEs. We go to the last one. एटा होछ देखो एसडीजी डैशबोर्ड टे देखो ये फोटो नहीं जायरो एसडीजी डैशबोर्ड सो एटा ठीक एटा हबो 24 एटा हबो 18 प्लीज नोट डाउन एटा हला 24 एटा हला 18
এইটা হচ্ছে না ভুল ঠিক আছে মুটে ডেসক্রিপ্ট করে করছি সো নাও we go to the last slide. Okay, we go to the last slides. What is the key impact of NITI Aayog and what are the limitations? First, it is promoting competition through data-driven ranks. It is promoting competition through what? It is promoting competition between states. যেমন যে পাঁচটা প্যারামিটার করি সেইথরে করছে হলা aspirational district program, strategic policy advice, digitization, মানে যদি India chain for blockchain usage, এগুলা সব these are all the advantages of NITI Aayog. It is helping in coordination. Now limitation hela, please note down, limitation hela it has no authority to allocate funds except for the Atal mission and Jal Jeevan mission. It has no authority. Earlier 30% allocation korthala bartan kor. So therefore it is not able to enforce the policy in a sufficient manner. Jete so policy koruchi tar enforcement udako limited hochi. So therefore there is a suggestion that NITI Aayog should be constitutionally empowered. Instead of giving Jimti Amara Finance Commission achi, so there is a suggestion that like Finance Commission, the NITI Aayog should be also constituted body with financial powers. Tahale taro mane tige damta beshi rahebo. But all said and done, it is becoming a very, very good advisory repository. It is rich in data, it is coordinating. So, and planning is bottom up. Please note down, planning is bottom up. Agar the planning doesn't hotala top down hotala, now planning is bottom. Hello. So it out you man rakhiyo. That is that. But dekha tan hello. Bocha hoti hai. Yes. बुझीगला सब तो आज जो क्लास है दीटा एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट आमर प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू मेन की इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आमर से दिन से 341 रैंक आसले जे कहउतले ना ताको इंटरव्यू रे पचराइतला व्हाई इंडिया रो सबटू बेस्ट स्टेट हिसाब रे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रे ओडिशा नंबर 1 ताको इंटरव्यू रे यूपीएससी इंटरव्यू रे पचराइतले बोले मते पचले कि ओडिशा नंबर 1 कोन पाई कौन कौन पैरामीटर नहीं की करी छी सो यूपीएससी इंटरव्यू रे भी यही क्वेश्चन पचरा होय छी एंड पर्टिकुलरली हमरा पॉवर्टी सर जोडा पढेले वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिफरेंट कमिटी तो रहिबो एंड जोडा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमें देखिबा क्वेश्चन जोडा कि लास्ट ईयर पढितला नीति आयोग रो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जोथिरे 135 मिलियन से माने कहउछन जे लास्ट 5 इयर्स रे 135 मिलियन माने 13 कोटी 50 लाख लोकन को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रे आनी छथि सर तीनटा पैरामीटर कहले हेल्थ एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड सो हेल्थ रे हमरो नेले जेमति कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट न्यूट्रिशन तापरे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ए सब नेले एंड हमरा कोनटा जे क्वेश्चन उठि जे कोनटा एमती गवर्नमेंट करि दै छी जे 13 कोटी 50 लाख लोक बिलो पॉवर्टी लाइन तळु हमरा उठि के आछन जे हमें कहले एबे नुवा स्कीम्स आसीची वीबीजी राम जोडा कि हमरा एमजी नारेगा थिला सेतरे 100 दिन दियाउतला एतरे 125 दिन दिया गला एंड सिमिलरली इन जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी कि 4 कोटी घर गोटे गरीब पाई कौन दरकार रहिबा खाइबा एजुकेशन हेल्थ इलेक्ट्रिसिटी वाटर यही सब दरकार तेणु रहिया पाई घर दिया है खाइबा पाई कौन दिया है ना प्रति घर पिछा मुंड पिछा 5 केजी चाउल दिया होची प्रधानमंत्री हमरो गरीब कल्याण अन्न योजना जोड़ा हमें कहचे गरीब कल्याण अन्न योजना रे हमरा कोविड रु दिया होची 5 केजी चाउल इलेक्ट्रिसिटी पे हमें हर जो सौभाग्य सब घर को दौचे सार जमी पढ़ेले जल जीवन मिशन सब घर को पानी दिया जीव इलेक्ट्रिसिटी सब घर को दिया गैस दिया जोटा कि आम कहचे आमर उज्ज्वला योजना रे गैस दिया एंड सिमिलरली आमर सैनिटेशन आमर सब घरे टॉयलेट क्रिएट करा जोटा कि स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट तो यही सब इनिशिएटिव जो आमर
एते 13,50,00,000 लोकंकर एलिवेशन है सो आमे देखिबा कोन क्वेश्चन पढ़ी एंड जो जोड़ा का पॉवर्टी एंड आ ऊपर सर कहले वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्लानिंग कमिशन ऑफ पॉवर्टी ऊपर इकोनॉमिक पीआई को आमे देखिबा कोन क्वेश्चन आईएस रे भी पढ़ीथिला ओएस रो सो मु बेसी टाइम नेबिनी 5-10 मिनिट्स भितरे विल क्विकली गो थ्रू द टॉपिक सो गोटे हमर क्वेश्चन पढ़ीथिला हाँ सर जोड़ा एबे कहूतले जे पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2015 रे पढ़िथिला पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर as a measure of poverty in India was used by. So Bhagavati, Arvind Panagaria, Amartya Sen, then Raje, then T.N. Srinivasan, Suresh Tendulkar and Dandekar and Gata. तो कौन हम सर पढ़ी एबे एंड आउ गोटे क्वेश्चन हमरा पढ़ीथिला poverty the name of the economist who related poverty with concept of entitlement तो एटा हमरा poverty को concept of entitlement अमर्त्य सेन हमरा पढ़ीथिले ओके सो आउ गोटे क्वेश्चन हमरा पढ़ीथिला रिलेटेड टू poverty ऊपरे प्लानिंग और पॉवर्टी ऊपर भी हमर गुडा क्वेश्चन पड़ी छी एब्सोल्यूट पॉवर्टी माने कोन एटा गोटे 2018 क्वेश्चन पड़ितला व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट पॉवर्टी सो पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट जोटा रहउची तो एब्सोल्यूट से पचार जे एटा कोटा हमर ओके एब्सोल्यूट पॉवर्टी refers to a condition where a person is unable to meet the basic minimum requirements so calorie intake basic cloth सेंटर एटा हमर गोटे क्वेश्चन हमर पढ़ितला तापरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे 2021 गोटे पढ़ितला कोडा निया जायनी सोशल इनइक्वालिटीज एजुकेशन पर कैपिटा इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटा हमर निया जाय तापरे एटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सक्लूसिवली तो एटा हमर 2021 रे पढ़ितला तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमर की करथिले ना वाई के अलग कमिटी हमर एटा गोटे पढ़ीला 2021 रे तो जो जो क्वेश्चन गुडा पढ़ीला तो आमर को कमिटी कौन सार आम कही जे कैलोरी ठू आम नहीं कि हेल्थ एजुकेशन ये सब गुड़ाक ने देन अंगराजन कमिटी रे मेथोडोलॉजी आमर कौन कौन यूज कराइला 2023 रे गोटे क्वेश्चन पढ़ीला पॉवर्टी को नहीं कि जे पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया हैज बीन बेस्ड ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर नॉट ऑन इनकम लेवल ओके एंड इट इज डिफिकल्ट टू access the income of self-employed daily wage laborer तो कौन भाई हमें इनकम बदल रे कंजप्शन नौचे आ भितर कोटा स्टेटमेंट ठीक अछि और सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आर कौन आंसर हबो ना बी हिजबो बोथ हमरो कंजप्शन एक्सपेंडिचर अनुसार निया जाय पॉवर्टी एस्टिमेशन टा रादर देन इनकम लेवल सेकंड कथा हला जे हमें गोटे लोक जो डेली वेज लेबरर रहउछनी सेल्फ एम्प्लॉयड से मान को डिफिकल्ट एक्सेस करियो जने दिनु केतना रोजगार को तार डाटा नाही तेणु सेथि पई हमें फ्लक्चुएशन जगु को समय धर सीजनल ये समय कोविड आसला काम करना तो हमें पे डाटा नहीं सेही पई हमें कंजप्शन अनुसार हमें नउचे रादर देन इनकम तो एटा गोटे क्वेश्चन पड़ितला सो दीटा का करेक्ट सो आ ऊपर देखो बहुत गुडा क्वेश्चन हमर रिलेटेड टू हमर ओके आ गोटे को ऑर्गेनाइज सर भी कही को ऑर्गेनाइजेशन डाटा हमर कलेक्ट करूची पॉवर्टी इन इंडिया तो एटा 2024 रे लास्ट ईयर पड़ितला एनएसएस हमर डाटा कलेक्शन करूची ओके सो आ गुड सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू मेजर पॉवर्टी डिटरमिनेशन हमें देखुचे एटा गोटे क्वेश्चन हमर पड़ितला जोटा कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स हेड काउंट रेशियो सेन इंडेक्स गोटे पड़ितला तो तीनटा का हमर करेक्ट अछि सो ऑल थ्री आर मेजर ऑफ सेन पॉवर्टी देखो पॉवर्टी डेफिनेटली गोटे हमर क्वेश्चन हमर पड़िबो एटा गोटे क्वेश्चन पड़ितला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेट आर द पुअरेस्ट
ना लास्ट ईयर पड़ीला जे सबुठु पुअरेस्ट कोन सार जो डाटा गुडा देखौथिले जे केते को स्टेट रो केते परसेंटेज हमर पॉवर्टी अछंती से अनुसार डाटा गुडा तुम देखिबो से झारखंड बिहार एंड उत्तर प्रदेश ओके तो एटा तमरो रिपोर्ट रहउची आ गोटे जीएसटी बिल एगुडा कते गला एंड पॉवर्टी ऊपर एगुडा थिला सार आज जो पढेले नेहरू मालनोबिस मॉडल 2022 रे एटा हमरो कोन पय हेतिला ना पर्टिकुलरली प्लान ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एटा गोटे हमरो पढिला तो आउ गोटे रिलेटेड हमर जोडा पढितला जीएसटी बिल ऊपर ते क्वेश्चन गोटे रहउची तो जेती पढ़े से सेती रो तमो तीन चारटा क्वेश्चन आछि रिपोर्ट पढ़ी थी सर एटा तो लास्ट टाइम करि देथिला बुलेट कार्ड ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की पढ़ी है फिजिकल हेल्थ तार पैरामीटर्स हाँ 2017 गोटे पड़ीला तेंदुलकर कमिटी वाज अपॉइंटेड ऑन तेंदुलकर कमिटी हमर कोन ना पॉवर्टी एस्टिमेशन पे हमर पड़ीला सर जोडा कहले तो जो जो ओपीएससी रे जो क्वेश्चन गुडा का हमर आसुची तो ताकू हमें सिंपल क्वेश्चन आछि सिंपल क्वेश्चन आछि आज सर जोडा पढौथिले कि हमर एम विश्वेश्वरଙ୍କ कथा कहथिले तो गोटे लिखिबो त बही ना गोटे पढुची प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया एटा एम विश्वेश्वर हमर लिखिथिले ओके बही रुकोटा आछि बुझले कि रो रुकोटा हो जाय आ गोटे इंपोर्टेंट लास्ट टाइम पढितला एमडीपी पढितला ओके जस्ट देखि दउची जोटा कि सार आज पढ़ेले दी थर सेटा पढ़िलानी एमपीआई सॉरी एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स राइट नहीं सर से प्लानिंग प्लानिंग ऊपर आउ कोन पड़ी छी कोडा अच्छा तो एटा गोटे क्वेश्चन पड़ीला हमर ओके सो एटा गोटे मिनिट हमर देखिबा आईएएस रे कोन क्वेश्चन पड़ीला 2 मिनिट्स खाली सेडा में रन थ्रू करबा 2 मिनिट्स गोटे सार कहले जो क्वेश्चन गोटे पड़ीला पॉवर्टी ऊपर जे हमर जो पॉवर्टी कैलकुलेशन होची जो क्राइटेरिया निया होची जो लिविंग स्टैंडर्ड जो रहउची डिफरेंट स्टेट पे सार जेमति कहले बॉम्बे रे गोटे दोसारा दाम 10 टका हला ओडिसा रे हमर 2 टका होची तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग टा डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट तो एटा गोटे हमर क्वेश्चन पड़ीला मैं देखिबा तो आईएएस रे को भले क्वेश्चन पडुची रिलेटेड टू आकु नै कि आई जस्ट show you the question then we'll wrap close kariba okay so 2 minutes सो जो गुड़ाक पढ़ाला पूरा भल से सार सब गुड़ाक डाटा सह कहउचंदी तेनु ताकू भल से टिके देखिदब एंड जहाँ भी क्वेश्चन पड़िबो हे इज भाई सब क्वेश्चन जहाँ भी पडुची परीक्षा रे सो इट विल माने देखिबा आईएएस रे को भले क्वेश्चन पड़ितला
So last 10 years रो जो क्वेश्चन जो गुडा को देख देखुचे energy sector आप और अच्छे क्वेश्चन प्लानिंग ऊपर गोटे क्वेश्चन हमर पडितला 2019 रे विथ 5 ईयर प्लान सर जो पढेले को प्लान ईयर रे कोन हेतला सेकंड 5 ईयर प्लान रे कोन हेतला एटा 2019 रा आईएएस क्वेश्चन थला जे सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज ए डिटरमाइंड thrust towards substitution of basic and capital good of industry तो हमर कहिले जे सेकंड रे हमें इंडस्ट्री पर मोर फोकस करितले कैपिटल गुड्स फॉर्मेशन ऊपर हमर कहितले सो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अछि सेकंड द फोर्थ 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव of correcting the earlier trend of increasing concentration of wealth and economic power so fourth 5 year plan ने कौन हेतला हाँ okay so इटा हमरा तापरे fifth 5 year plan for first time financial sector was included as integral part तो आर देखिबो जो सेकंड जो फोर्थ 5 year plan ता necessary corrective to earlier trend which is help particularly stronger section in agriculture सेल्फ सफिशिएंस कथा हमर कहथि सेल्फ रिलायंस कथा हमर जो कहितले एग्रीकल्चर रे ग्रीन रिवोल्यूशन हमर आसीबो ए सब गुडा को तो ठीक अछि ओके सो थर्ड स्टेटमेंट हमर 9th 5 ईयर प्लान में आसीबो जोटा कि फाइनेंशियल सेक्टर कथा हमर 9th 5 ईयर प्लान में आसीबो ओके सो एडा गोटे क्वेश्चन हमर पडितला देन हमर एथिरे दिस जोटा का हमर ऑलरेडी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कोन हेछि सेकंड 5 ईयर प्लान में कोन हेछि तो एटा डिटेलटा दिया छै ओके रिफॉर्म गोटे रहिला आउ गोटे पॉवर्टी ऊपर 2019 रे गोटे क्वेश्चन पडितला इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट देन इन अदर स्टेट कोन पई गोटे स्टेट रे पॉवर्टी लाइन जो रहुची बीपीएल लाइन हमर अधिक गोटे कम पई तो कोन पई ना हमर प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट सर जोटा कहिले तुम जहां सर कहू जंदी दैट इज ए क्वेश्चन इटसेल्फ इन यूपीएससी तो लाइन बाय लाइन जोड़ा सर कहउछंती मे भी तमे सेटा भल से सुनु न कि सुनु नथबो मार्क नथबो बट एडा गोटे क्वेश्चन होची यूपीएससी रो क्वेश्चन सर भल से कहले कि जो हमरो प्राइस लेवल डिफरेंट हम लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट रहउची बॉम्बे ओडिसा रो तो जेहेतु हमरो प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट सेही पई हमरो जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन इन सम स्टेट रे डिफरेंट होची अदर स्टेट तो ए सब गुडा को भल से तमे देखिबो जहां भी क्वेश्चन हमरो पढुची रिलेटेड टू पॉवर्टी हो और तमरो जो प्लानिंग ऊपर नै के हो आ गुडे भलो क्वेश्चन कहले मने रखिबो प्लानिंग कमिशन और नीति आयोग को नै कोन क्वेश्चन पडितला हमें ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन करथिले प्लानिंग कमिशन रु नीति आयोग केमिति डिफरेंट गोटेला हमर टॉप डाउन अप्रोच एटा बॉटम अप अप्रोच हम जेंति कहले आ गुडे मोस्ट इंपोर्टेंट एथिरे टर्म मने रखिबो जे एटा हमर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बॉटम अप अप्रोच जे जो प्लानिंग नीति आयोग जो अच्छी तार चेयरमैन होछन प्राइम मिनिस्टर जने डेप्यूटी चेयरमैन एबे रहउछन सुमन बेरी अछन डेप्यूटी चेयरमैन एंड एथिरे सब गोटे टीम इंडिया अछि जोथिरे सब स्टेट रो चीफ मिनिस्टर माने भी अछन ता माने जहां भी प्लानिंग करा होछि स्टेट रो से सितरे रहउछि तो सेहि दिपे हमें कहै जेटा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म समस्त को नै की किंतु प्लानिंग कमिशन कोन आगरु सीए जो गोटे ग्रुप सोनिया गांधी रहउतिले अन्य तांकर मेजर लोक रहउतिले सेमाने डिसाइड करतिले कोन होतिले किंतु एथिरे सब स्टेट रो व्यूटा रहउछि सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्ड ता मन रखिबो एटा भी आईएएस रो प्रीलिम रे एमसीक्यू रे पढिथिला ओके just one half a minute sir half a second cooperative federalism sangre au gote astuch term competitive federalism please note competitive federalism competitive federalism mane ame rank kurche different states ko competitive federalism means when you are funding based on ranking of states based on the parameters जो पांचटा पैरामीटर रहिला
से पैरामीटर रे तमे कोन मार्क रखिलो से हिसाब रे तुमको दिया जो सो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हला कोलैबोरेशन एस्पिरेशन दिस प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हला फंडिंग इज बेस्ड ऑन रैंकिंग सब रिपोर्ट गुडा को परीक्षा पढुची ओके सो सब रिपोर्ट गुडा सारा जी जो गुडा पढेले नुवा रिपोर्ट पढैछ सेडा के मन तो ठीक अछि सर जो रिपोर्ट गुडा को पढेले से गुडा अटल इनोवेशन मिशन हैला तापरे हमर जल जीवन मिशन हैला एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबे लास्ट ईयर बजट रे हमर जोडा 5टा ब्लॉक को हमर फोकस करा ओके सो ठीक अछि थैंक यू सर थैंक यू सो मच Thank you so much. ओके ठीक अछि तो हमें जो जोड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक्स है सेउडा को कवर करिवे जोड़ा को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो ओके सो मंडे रे हमें करंट अफेयर्स कवर करिवा मंडे ओके वन डे हमर करंट अफेयर्स होइबा जोड़ा कि वीकली कि हमर जहा जहा करंट अफेयर्स हेछि ताको हमें कवर करबा ऑनलाइन सेटा सर ऑनलाइन करिवे गोटे दिन ऑफलाइन आ गोटे दिन ऑनलाइन करिवे सेटा ऑनलाइन तमे जाबे आरंभ कर देछि टीम पढ़ो 100 टीम पढ़ दबो व्हाट आर डूइंग इंपोर्टेंट इवेंट्स तो ओके ठीक अछि थैंक यू एवरीवन थैंक यू सर Thank you, sir.